Good morning, everyone. So, till the last class, we had discussed about the statistical analysis, the importance of statistical analysis in any kind of, scientific work or academic work, and the significance, the importance of its procedures to be adopted, and how does it, make us help us in concluding the observations, in concluding the inferences. So that way, we had seen many of the aspects of statistics, like mean, median, mode, and this deviations from the mean, and the errors calculated on the basis of deviation, and how those standard error and deviations are used to get that, to conclude that how much of importance your data carries in concluding any inference about the data which we had collected. And if we are comparing with different groups of data also, then we need to see whether is there any variation between those groups, and if there variations are there, so how these variations are interconnected, interrelated. So we had also come across the term correlation, that is the relation between the groups, and the regression, how they are not, related to each other's conclusions or inferences. That way, there are many terms which are to be like considered whenever you are analyzing your data statistically. Well, we had seen about the ANOVA also, analysis of variation, analysis of variance. That shows how these different groups of data related to one aspect, one parameter, are related. And we had already seen about the degree of freedom, the level of confidence, and the probability of you being, or the data being, wrong. So that is usually done in terms of 0.05 probability. That means 0.05, that is out of 100, you have uh, you know uh, 5 times your data could be wrong. So for that, we have, usually we have the uh, data charts, the tabular form of the data charts with a critical value. If the value is less than the critical value, we say your data is significant. And if it is not, then we say it's not significant. The data you have collected carries no importance. Sometimes, in survey type of data, the survey, जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन है, तो बहुत सारे different types of data is being, accumulated. The number of people, the age group of people who are getting infected, or the number of people who are having the core morbid situation, like they have already some ailments or some malfunctioning in their body. If they are being affected with COVID, so how does they respond? What are the responses of the drugs that are used in hospitalization, and what are the drugs which are used in home quarantine? So that way we have, survey collections, and these survey collections are usually uh, I meant to say these can be of different nature, and this difference of nature tells us uh, how that difference of nature are correlated. How does that observations on the basis of which we have concluded some inferences, how do they are like can be applicable for the whole population? If you're doing it for the limited number of people, and how does that can be implied or applied for the whole population? If at all we are considering the Nagpur, at different places we have collected this data, and how does that data can be related to the whole of the Nagpur population? So that way, statistics carries a much importance, significant role in assessing the influences of the data which has been collected, or the observation which we have done. So now we would be shifting from here to some other aspect, like in the biotechnology section, we have
few topics that had to be considered, that had to be, you know, that had to be studied. And in that, the first term was, sterilization. So, what is sterilization? Can anybody tell me what exactly sterilization means? What do you understand by sterilization? Anybody? Disinfecting. Okay, disinfecting means what? Okay, right, right, right. So not only microorganisms, you can say anything which is, which acts as a pathogen, which is a causative agent for any kind of syndrome, situation, or disease, whatever. Whatever abnormal condition is being raised with the help because of some causative agent. It can be a microorganism, it can be a virus, it can be a fungus, it can be something else. Any small animal or any protozoa, it can be a protozoan too. So, depending upon the causative agent, the situation, the abnormal condition can arise in an organism. And you say, as you said, uh, making avoid or devoid of these causative agents for any kind of ailment or a situation or syndrome. We call it's a procedure of sterilization. Sterilization is required at many places. Like nowadays in the COVID situation, what we are doing, we are making our hands sterile. We are sterilizing our hands. Why we sterilize our hands? Because of the fear of getting virus on our hands when we touch some objects which are commonly used. Uh, as you all know, there is a one concept or one concept has been there in the population that it has been spread by air. But I would like to enlighten over here that it doesn't spread by air. It doesn't spread. But there are some speculations like there was a comment जिसे मैंने आपको बताया था research articles के बारे में वैसे ही sometimes जैसे अभी पैंडमिक सिचुएशन है एपिडेमिक सिचुएशन है तो इस सिचुएशंस में कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें हॉस्पिटल्स में या फिर सेंटर्स पे वी कलेक्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वी यूज टू कंक्लूड सम इन्फ्रेंसेस तो वो जो कंक्लूजन्स होते हैं उन कंक्लूजन्स को यू नो हमें क्या हमें सॉरी आई हैव लॉस्ट द लिंक एनीवेज वी हम क्या बात कर रहे थे हाँ राइट तो अभी कुछ ऑब्जर्वेशंस सम ऑब्जर्वेशंस लाइक we are getting some observations in which it's said that a person has been like he's been infected and he stayed in a room, and when he leaves that room and after that if some a non-infected person enters that room, so even there are cases in which that non-infected person is also infected even if he is not in contact with the affected or infected person. So this is because not that the virus has been traveling through air. It in a way it is traveling through air, but it is not traveling, it is staying in the air. When an infected person is in a room and he coughs or sneezes or talks in loud, talks in a vigorous way, so what happens? The droplets come out of his mouth or nose, as per his procedure. Like छींका होगा तो नोज से ड्रॉपलेट्स आएंगी, खांसा होगा तो मुंह से ड्रॉपलेट्स आएंगे, and these droplets usually carry the viruses, and ये droplets ही एक means of communication है या communication दूसरे एक person को infect करने का जरिया है. But what has been observed that when a person was there, an infected person was there in a room, when he coughs or sneezes, the droplets usually do not, they are not flown away from the room. They stay there. Now, what happens when the
droplet is lesser or smaller than 5 micron thickness. 5 micron का यदि diameter के droplets से छोटे होंगे, so what happens if these fine droplets, these are called fine droplets, these fine droplets usually stay in the air for a longer period. If it is more than 5 micron diameter droplets, they might erupt or they might collapse or they might settle down to the earth. नीचे the floor की तरफ वो settle हो जाते हैं. But fine droplets, they stay in the air. And if that room is not ventilated properly, if the air does not ventilate that room, then what happens? These droplets stay over there. And when a non-infected person enters that room, he gets the infection through those droplets which are already there in that air. So that way, it's been speculated that this virus has been communicated through air too, but not exactly the air communication, the communication through air. जैसे freely virus खुद उड़ते हुए नहीं जाता, it doesn't come through air, but it stays in the finer droplets because the virus is very small, so it can stay in the bigger droplets also and in the smaller droplets also. When the finer droplets are there through its sneeze, forceful sneezing में बहुत सारे finer droplets भी आते हैं, and forceful coughing में भी काफी finer droplets आते हैं. हम जब बात करते हैं, then also we spit out droplets, but those droplets are of bigger size. Normal coughing and normal sneezing is also they also have bigger droplets. So these bigger droplets usually settle down to the floor, they settle down to the earth, and that cannot spread to another person. But if they are smaller droplets, finer droplets, then there is a possibility, there are the chances, and ये जो chance है of getting the non-infected person getting infected with the virus, the COVID virus, in a room where there was an infected person. So ये जो है इसको हम usually बोल रहे हैं air के through infect हो रहा है, but it does not travel on itself in the air. It is not flown away with the air. But what happens? These finer droplets are difficult to be erupted. Erupt होने में और settle down होने में उनको समय लगता है. So you need to have an aerated or a ventilated room so that these things cannot happen. And the percentage of percentage of chances of getting infected by this mode is around 50 to 60%. So this was an observation which was published in a Lancet journal. Lancet is a good journal. You must have seen. अभी आप लोगों ने जब journals के नाम check करने गए होंगे, तो you must have found the Lancet as one of the good journals. तो उसमें एक research article जैसे publish नहीं हुआ था. It was published as a comment. Comment means it's a immediate observation on some kind of whatever, immediate observation on some data. एक data already exists कर रहा है, उसके ऊपर एक immediate observation, जैसे ये air के through transfer हो रहा है, इस बारे में जब बताया लोगों ने, that is because of the final droplets. So ये comment के अंदर publish होता है usually research articles में. You get to know when you go to research publications and all, when you come into the field of publishing your manuscript, then you come to know कि regular research article क्या होता है and short communication क्या होता है and comment क्या होता है या फिर एक review article क्या होता है. Review article is a bigger article. It is a review of many of the articles that have been published in the same topic. So that becomes a review article. Usually review article should be written, or the good journal will value only that person who has already few publications on that topic. यदि मेरे कुछ publications एक ही particular topic के ऊपर कुछ minimum number of publications हैं और उसके ऊपर मैं review लिखता हूँ, then it will be considered by good journal. It will be considered at that point of expertise. यानी कि मुझे उतना expertise आ चुका है कि I can review about the papers which I published and which people have published on the same topic. So that usually एक expert होता है उस field में, वही review article लिखता है. But nowadays in India we have seen so many people बस बाहर से papers collect करते हैं and they start writing review on it. They might write good review. They might make a good manuscript out of those
100 papers which have been published on that topic. But I would say this is not a proper way to write a research article, a research review. So for a review purpose, you need to be expert in that particular, field or topic. Anyways, so ऐसे बहुत सारी चीजें थी, मैंने एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आपको बताया था. तो ये जो कमेंट आया था लैंसेट में, that showed a different kind of observation that's been जैसे कि हवा से फैल, तो उसको वो अलग तरीके से पोर्ट्रे कर दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप में कि हवा से फैल रहा है, हवा से फैल रहा है. But it's through the droplets only, but on the finer droplets which could stay for a longer time in the atmosphere, in the surrounding near us. Anyways, so when we want to or devoid of these pathogens which could cause an ailment, जैसे कि इस केस में कोविड वायरस है, आई मीन SARS-CoV-2 वायरस है, तो ये वायरसेस से हमको छुटकारा पाने के लिए हम यूजुअली ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हम एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर सकें ताकि ये वायरस या फिर ये पैथोजन हमें इन्फेक्ट ना कर सके. तो उसको हम जैसे बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट. अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है. प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स बैक्टीरिया है ना. तो ये सब सेल्स को they are living in nature, so they can multiply on their own. So we need, if that particular organism is causing some ailment in us, so we need to as a precautionary measure we need to have a protection or a precaution to get away from getting into the contact. So ये जो disinfectant word है, simple से word है, सभी जानते हैं disinfection word, but sterilization is a process by which you are making the pathogen or the causative agent not to able to infect the organism or human being. हमें वो इन्फेक्ट ना कर पाए ऐसी सिचुएशन में उसको लाना. यदि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, so there are chances, there are ways by which we can do this process, that sterilization or disinfection, with the help of few organic chemicals, many organic chemicals, many organic solvents हैं जिसके थ्रू, जो usually volatile हैं. When the solvent is volatile, what happens when we apply that volatile solvent on a surface? What happens? It evaporates, it vaporizes. Volatile मतलब भी वो है कि वो उड़ जाता है. So while going away from the surface, वो क्या करते हैं, either in the form of vapors or in the form of small droplets, they might leave the surface. And the droplet formation usually occurs when something is there on the surface. यदि कोई डस्ट पार्टिकल है या वायरस पार्टिकल है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसके साथ बिकॉज ऑफ सम फिजिक्स वो सरफेस टेंशन के कारण ड्रॉपलेट्स बना के वो they might leave or they might make that particular organism non-functional. उसके फंक्शन को वो रोक देता है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो the best way to make them non-functional is to kill them or to make them non-effective by making them burst out or making them to रप्चर. यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको आप रप्चर कर दें, उसमें छेद कर दें, या फिर उसको ऐसा कुछ सोल्यूशन में डालें कि वो फूल जाए और बर्स्ट हो जाए, है ना. यानी कि जैसे कि अब वो आइसोटोनिसिटी वाली बात आ गई. यदि टॉनिक सॉल्यूशन हम दें, जैसे कि मालूम है कि हम इसको हाइपर सॉल्यूशन बना दें, तो जैसे हम सॉल्ट सॉल्यूशंस भी यूज करते हैं एज डिसइंफेक्टेंट. तो वो क्या होता है कि द सॉल्ट कंटेंट वो सेल के अंदर और बाहर जो हम सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं, they are of different concentrations. So what happens, either they shrink or they swell depending upon the concentration of salt, and that way they might burst or they might become non-functional. So living है तो it's easy for making them non-functional, either make them shrink or make them swell and get burst. लेकिन जैसे कि अभी वायरसेस हैं, तो वायरसेस में क्या होता है, वायरसेस में क्या होगा कि वायरसेस तो नॉन लिविंग है,
They are non-living because they cannot reproduce on their own. They need some living cell to get into the process of reproduction. So what happens? We usually give some organic solvents in which, because of which, these viruses, they lose their integrity because of some soluble, coat composition. यानी वायरस का जो कोट है उसके कंपोजिशन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं विच आर सोल्यूबल इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट. यदि वो उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं तो दे लूज देयर इंटीग्रिटी. यदि वायरस है, हो सकता है उसके एनवेलप जो प्रोटीन्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएं या फिर डी नेचर हो जाएं, हाँ, या फिर वो ब्रेक डाउन कर जाएं. तो ये जो पॉसिबिलिटीज है, ये जो प्रोसेसेस है, इनके थ्रू हम वो नॉन लिविंग वायरसेस को भी वी मेक देम नॉन फंक्शनल. We make them unable to enter into any of the cells, living cells, to get themselves multiply. So that way, यानी कि living भी रहा, तो it's easy to make them swell and burst, or make them shrink and non-functional. Or you can, the best part is that the best way is to make them swell and burst, so that the internal content of that living organism would come out, and they become non-functional. And those content can be, if at all they are inside the body, they can be digested. And if it is there on the surface of the body, they can be, of no use because the internal content has been disintegrated. So that way living system रहा तो भी possibility है कि हम उनको मार दें, या फिर नॉन लिविंग रहे जैसे वायरसेस हैं तो हम ऐसा कुछ सॉल्वेंट दें कि उनके जो कोट है, कोट कंटेंट है, या फिर प्रोटीन कवर है, वो सब चीज़ों को वो डिसॉल्व कर दे ताकि वो उसकी जो इंटीग्रिटी है वो टूट जाए. सो दैट वे इन्हीं सॉल्वेंट्स को, जिस भी सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं, अब हम थोड़ा सा लास्ट ईयर का हम याद, शायद इसी साल है, आपको माइक्रोटेक्निक इसी साल है. तो माइक्रोटेक्निक हम जब पढ़ते हैं तो एक ऐसी चीज़ पता लगी, बहुत पुरानी एक डिस्कवरी है कि when a living system is in the surrounding of a solution which has got different concentration of salts, यानी कि उसकी लिविंग सिस्टम के अंदर का जो लिक्विड पोर्शन है उसका यदि हम देखें सॉल्ट कंटेंट यानी कॉन्सेंट्रेशन, और उसके सराउंडिंग के कॉन्सेंट्रेशन में यदि फर्क है तो वाटर मॉलिक्यूल मूव्स ईदर इनसाइड और आउटसाइड. ये हम जो ऑस्मोसिस में पढ़ते हैं, क्योंकि यूजुअली सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं, अब आपको सबको मालूम है सेल मेम्ब्रेन्स आर यूनिट मेम्ब्रेन्स, ये यूनिवर्सल मेम्ब्रेन्स हैं, यानी कि ये हर जहाँ भी आपको मेम्ब्रेन नजर आएगा वो इसी प्रकार का ही यूजुअली हमें कंपोजिशन मिलता है. तो ये वो एक ऐसी डिस्कवरी थी बहुत लॉन्ग बैक कि यदि हम अल्कोहल यानी कि एथिल अल्कोहल उसके यदि किसी कॉन्सेंट्रेशन को लें तो क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो खराब हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट concentration, isotonicity, or what happens the movement of water from inside to out या फिर outside to in. अब ये देखा गया है कि एक डिस्कवरी जो मैं बोल रहा था वो ये है कि एक परसेंटेज ऑफ अल्कोहल ऐसा है जब हमारे जो वाटर का जो फ्लो है उसको स्टेबल कर देता है, दैट स्टेबलाइजिंग वाला जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल है, यानी कि वाटर मूवमेंट अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जा पाती, तो वो है एक 70%. तो याद रखना हमेशा 70% एक ऐसा परसेंटेज है जिस परसेंटेज पे अल्कोहल का एक ऐसा परसेंटेज है जिस कॉन्सेंट्रेशन पे हमने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटर या सराउंडिंग को हमने 70% अल्कोहल से एनरिच कर दिया है. तो व्हाट हैपेंस, द वाटर मूवमेंट जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है एंड दैट ऑर्गेनिज्म मे लिव फॉर लॉन्गर टाइम. वो और काफी समय तक जिंदा रह सकता है, इवन इफ बिकॉज इट्स नॉट लूजिंग इट्स वाटर और नीदर द एनी अदर कंटेंट इज कमिंग इनसाइड इट. सो दैट वे 70% एक ऐसा परसेंटेज है इसका, आई मीन अल्कोहल का, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टेबलाइज कर सकता है इन टर्म्स ऑफ टोनिसिटी, या फिर कहें कि हम उसको इन टर्म्स ऑफ वाटर लॉस और वाटर गेन.
तो टोनिसिटी यूजुअली हम सॉल्ट के कंटेंट में करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि कई बार सॉल्ट का पानी को हमने कहीं स्प्रे किया तो यूजुअली जो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सराउंडिंग एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ salts in inside. So what happens, the water comes out, तो वो काफी shrink हो जाते हैं, they become non functional. और वैसे ही हमने यदि मतलब हाइपोटोनिक भी दिया कभी कभी तो उस केसेस में भी ऐसा होता है कि वाटर स्वेल भरने लगता है एंड भरते 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 वो बर्स्ट हो सकते हैं सेल्स. लेकिन दिस ये जो तरीका है हमको स्वेल और बर्स्ट करने का, वो यूजुअली हमें मालूम होना चाहिए कि उस ऑर्गेनिज्म का internal concentration क्या है. So this we need to know. Otherwise, in a generalized term, you make it shrink, let the whole water come out of that organism, and let it become non-functional and let it become dead. तो इस प्रकार से और वैसे ही जब हम अल्कोहल के कंटेंट्स को यूज करते हैं तो हम यूजुअली वाटर मूवमेंट्स करा देते हैं जिससे वो श्रिंक हो सकता है या फिर वो श्रिंक ही होता है यूजुअली हमेशा, क्योंकि हम यहाँ पे तो कहने का मतलब ये है कि 70% के ऊपर का कॉन्सेंट्रेशन है अल्कोहल का, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी द मच ऑफ द वाटर विल कम आउट ऑफ द सेल एंड इट विल श्रिंक एंड इट विल बिकम डिफंक्ट. सो ये डिसइंफेक्शन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है जो लॉन्ग लिव्ड है, काफी पुराने समय से वी नो इट एंड हमें सब मालूम भी होना चाहिए. जैसे मैंने आपको 70% की बात की थी, इसलिए 70% एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिसमें सेल को हार्म नहीं होता यदि लिविंग रहा तो. लेकिन नॉन लिविंग रहा तो देयर इज अ फुल पॉसिबिलिटी दैट द कोर ऑफ दैट नॉन लिविंग, the composition of non-living might get dissolved in alcohol.
Sorry, I was out of the class. I was logged. Hello. हेलो। सुन सकते हो आप लोग? मुझे सुन सकते हो? हाँ, आवाज चली जाती है बार बार। मैं बोलूं, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को फिर से?
मैं बोलूं, मैं बात करूं? So you all can hear me, right? Okay. So we were seeing that there are many organic solvents which can serve the purpose of making that organisms or pathogens or causative agents uh, to get defunct or non-functional, and thus the ailment or the pathogenicity can be reduced or avoided. So as I said, that percentage of alcohol that was discussed long back, and the 70% was considered as a very favorable for living system, at least for not getting it, you know, spoiling. Or it is a kind of concentration. It is the concentration at which the living organisms stay as such for longer periods. They don't get deteriorated because they don't take any water inside, and they don't lose any water in that to the older times. And people have seen that simply with the help of heat, with the help of temperature, even the temperature can make these organisms non-functional, or they make them killed. So that way, the temperature was much earlier founded as one of the aspects, or the one of the parameters, or the one of the factors organisms non-functional or make the organisms dead. So that way एक टेम्परेचर वाला एक एस्पेक्ट भी जो था वो बहुत पुराना है, even it's older than the solvents which have been used for disinfection. So ये जो टेम्परेचर है वो देखा ही गया है कि टेम्परेचर कैसे, should it be a dry temperature or should it be a wet temperature. That means dry temperature is simply heating on a dry surface, or wet temperature means the liquid or the solvent in which it is there, and that solvent is boiled up, or it is the temperature of that solvent or that particular liquid has been raised. So even that can help those organisms to get defunctional or dead. सो सॉल्वेंट्स के पहले ही, बहुत पहले ये जाना जा चुका था कि टेम्परेचर एक एस्पेक्ट है जो यूजुअली ऑर्गेनिजम्स को मार देता है, इट किल्स. बट इट वाज काफी समय तक यही चलता रहा. बट इवन द ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग है वो डार्विन से फॉलो करेंगे. दे वुड स्ट्रगल टू make themselves exist, the survival of the fittest, and struggle for existence. ये जो postulates हैं डार्विन के theory के, evolution के, so that makes these living organisms more wild, or more strong, or more resistant varieties, or resistant species. मतलब जैसे कि बैक्टीरिया है जो यूजुअली मार दिए जाया करते थे टेम्परेचर रेज करने का, धीरे धीरे they have modified themselves, and they have made themselves resistant to the temperature, and many of microorganisms have been found which are usually not very much destroyed or very much killed with the raise of temperature, but most of the living organisms does not sustain the high temperatures because उनके सब प्रोसेसेस, जैसे कि हम भी हैं, हम भी बहुत ज़्यादा गर्मी बेयर नहीं कर सकते. But we are very highly evolved animals, so we have a protective layer है हमारे पास. उसके प्रोटेक्शन के अलग तरीके हैं. We perspire and we maintain the temperature of internal body, internal milieu, I mean internal environment का जो है हम उसके temperature को maintain कर लेते हैं. But those animals which do not have this kind of system to maintain their body temperature, they might lose their lives, they might lose their functionality. So देखा जाए तो ये much before the solvents and the organic liquids, ये temperature एक ऐसा factor था जो usually microorganisms को kill कर दिया करता था. तो वो उसके भी ढेर सारे उसमें भी बहुत इवोल्यूशन हुआ है. टेम्परेचर कैसे रेज किया जाए,
या फिर सिंपली फ्लेम के ऊपर हम जब किसी चीज को यानी सब कोई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो क्या हम उसको सीधे फ्लेम में रख दें ताकि वो हाई टेम्परेचर हो जाए, उसके बाद फिर बाद में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके सरफेस पे होंगे तो वो मर जाए। तो यूजुअली हम इन चीज़ों को फॉलो करते थे फ्रॉम एज ओल्ड टाइम्स। तो वो उस समय से ही हम, जैसे कि हम नीडल यूज कर रहे हैं मान लो इंजेक्शन के लिए, तो उन इंजेक्शन को हम यूजुअली क्या करते थे, आग पे उसको we make them red hot so that every organism whichever whatever is there on the surface of the needle might get dead, एंड देन फिर बाद में हम किसी अल्कोहल से उसको वाइप आउट कर लेते थे। तो वाइप करने से क्या होता था कि कुछ और बच गए होंगे तो वो भी डिसइंफेक्ट हो जाएंगे या फिर वो भी डिफंक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे टेम्परेचर एक ऐसा एस्पेक्ट था जिसको हम यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिवॉइड करने के लिए टू गेट rid of these microorganisms to be get infected, वो हमने टेम्परेचर बहुत पहले से शुरुआत की। तो वो टेम्परेचर के बाद हमने बॉइलिंग वाला पोर्शन भी यूज किया, इफ इट ऑल इट इज देयर इन द लिक्विड, लाइक जब वाटर हम पीते हैं, पानी पीते हैं, पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली are get rid of by boiling that water, because the boiling of that water does not affect the nature of water, and after cool the water becomes, water remains water only, but in some cases you cannot boil sometimes। तो वहां पे हमने देखा कि कैसे किया जाए। तो फिर ये धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है। हमने उसको फिर बाद में सोचा कि हम यदि बॉईल करेंगे तो वो खराब हो जाएगा, तो कोई और तरीका है क्या, सिंपली ड्राई हीट है। तो ड्राई हीट है मान लीजिए, तो हम उस कंटेंट को सपोज करो ड्राई हीट पे रखेंगे तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता हो। तो देन दे हैव सेड अच्छा कुछ और चीज की जाए। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो स्टीम क्यों ना यूज किया जाए, स्टीम का भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, 100 के ऊपर रहता है, तो क्यों ना हम स्टीम स्ट्रेट अवे उन चीजों पे डालें, स्टीम से हम उसको एक्सपोज करें तो शायद वो पैथोजेंस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। तो दैट वे हमने अलग अलग तरीके से उसको टेम्परेचर को इवॉल्व किया, अलग अलग तरीकों से हमने टेम्परेचर को यूज किया। ड्राई हीटिंग हो गई या फिर बॉइलिंग हो गया या फिर स्टीमिंग हो गई। तो वैसे ही चीजें धीरे धीरे डेवलप होने लगी। नॉर्मल हीटिंग मतलब फर्नेस में रख देना, बॉइलिंग करना मतलब किसी लिक्विड में है तो उस लिक्विड को बॉइल कर देना, इफ एट ऑल द लिक्विड इज नॉट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन। और यदि मान लीजिए ऐसा कुछ है, यदि सॉल्यूशन बनाया है लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाएगा यदि हम इसको बॉइल करते हैं, तो वी डोंट यूज बॉइलिंग, तो वी स्टार्टेड यूजिंग स्टीम। वाटर को हमने वेपराइज कर दिया जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, एंड स्ट्रेट अवे उस स्टीम को हम उसके ऊपर एक्सपोज करते हैं या फिर वी स्प्रे ऑन इट। दैट वे तो चीजें अलग अलग चीजें आने लगी। तो जब हम स्टीम यूज करने लगे तो हम उसको बोलने लगे कि हम इसको ऑटोक्लेव करते हैं, यानी कि हम स्टरलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम। तो ये ऑटोक्लेविंग वाला एक कंसेप्ट शुरुआत हुई थी, ये बहुत लेटली डेवलप हुआ है। अदरवाइज पहले सिंपली हीट करो या फिर बॉईल करो, लिक्विड में नहीं है तो हीट करो, लिक्विड में है तो उसको बॉईल करो, दैट टू इन वाटर, क्योंकि वाटर को बॉईल करने के बाद भी वाटर ही रहता है। कभी कभी कुछ कुछ कंटेंट है जैसे कि कुछ कुछ लिक्विड्स हैं जो बॉईल करने के बाद चेंज हो जाते हैं, अपना कंपोजिशन बदल लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन है। प्रोटीन को आप बॉईल कर देंगे या हीट कर देंगे तो क्या होगा, डीनेचर हो जाता है, क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं, आई मीन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, उनके जो प्रोटीन्स को एक्टिव स्टेट में रखते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एसएस वाले जो बॉन्ड्स हैं, तो वो यूजुअली प्रोटीन्स को दे मेक दोज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक्टिव या फंक्शनल। फंक्शनल प्रोटीन्स बनाने के लिए हमें उनके इंटरलिंकिंग या फिर यूजुअली सल्फाइड बॉन्ड्स और दूसरे भी बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोक्सिल बॉन्ड्स भी हैं।
कैसे गई आवाज? आवाज सुन रहे हैं आप लोग? बेस, तो आज हम इतने ही और हम टाइम टेबल फॉलो कर रहा था कि फ्राइडे को रहेंगी। हम ऑटोक्लेविंग के बारे में भी देखेंगे, इम्प्रूवमेंट्स आए थे जिसमें बाद में लोगों ने स्टीम से भी कभी कभी किसी किसी कंटेंट्स में, किसी किसी लिक्विड्स में डिफॉर्मिटीज या कंपोजिशन में चेंजेस आते थे, तो फिर उन्होंने रेडिएशन शुरू किया था। फिर रेडिएशन, कौन सा रेडिएशन होना चाहिए, फिर वो एक अलग तरीका था। तो प्रोसेस है जिसमें हम यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वी गेट रीड ऑफ, हमने अलग अलग तरीके से इम्प्रूव किया है और वी स्टार्टेड गेटिंग रीड ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच यूजुअली कॉज some ailments, some symptoms. Anyways, हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक प्रॉब्लम हो रही है आजकल इंटरनेट, नो व्हाई। ओके, एनीवेज आज के लिए बस हम ये रोक देते हैं। आप लोग कितने लोग आए? विल स्टॉप हियर। ओके, सी यू ऑन फ्राइडे। ओके बेटा, चलो।